अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम इन कॉलेज फिजिक्स। सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे द डिराइवेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज वेल एज वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू व्हाट हाइट, डेप्थ, rotation of earth, non-sphericity of the earth and non-uniformity of the earth. Acceleration due to gravity. The force of attraction exerted by the earth on a body is called gravitational pull or gravity. As we know that when force acts on a body, it produces acceleration in the body. Therefore, a body under the effect of gravitational pull must accelerate. The acceleration produced in body due to under the effect of gravity is called acceleration due to gravity or gravitational acceleration and denoted by g. Let's consider a body of mass small m is lying on the surface of earth as shown in the figure. The gravitational force on the body is F equal to g mass of the earth, mass of the object divided by r square. Consider a body of mass m is lying on the surface of earth, then gravitational force on the body is given by force equal to mass multiplied by acceleration according to Newton's second law. ये हमारे पास अर्थ है, इस अर्थ पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, करेक्ट, जिसका मास है स्मॉल m और इस अर्थ का जो मास है इस पॉइंट पर कंसेंट्रेट है. Now the force of attraction between this mass and mass of the earth will be what? Equal to this one. But we know that when a force acts on the body, there will be produced some acceleration in the body. So it means this small m is under the action of force of gravity. And this gravity force equal to what according to Newton's second law? That is mass of the object multiplied by acceleration in this object. Now we have two equations of forces. One is this one from universal law of gravitation and one is this one from Newton's second law. Now compare this one and this two. We obtain F equal to F or simple F equal to mg equal to g m by r square. By cancelling this small into this m, we obtain g equal to gm by r square. Now putting the value of this gravitational constant, mass of the earth and radius of the earth, we obtain the value of gravitational acceleration of earth is what? 9.8 meter per second square. Now see this table, ये हमारे पास वेरियस प्लैनेट है और उसके corresponding radius as well as corresponding masses and gravitational acceleration on various planets. The gravitational acceleration on Mercury is what? 3.61 meter per second square. Mass of the Mercury 3.2 10 power 23 kilogram and radius of the Mercury is 2.43 10 power 6 meter. Now in this table, the Jupiter, which radius is large, which mass is large, as well as gravitational acceleration on the Jupiter is large than all other planets. And the gravitational acceleration on the Pluto is 0.61 meter per second square. Means the lowest value of gravitational acceleration at Pluto, which is 0.61 meter per second square, and the largest value of the gravitational acceleration on the planet is Jupiter, that is 26.0 meter per second square. Now our next task is first one, variation in gravitational acceleration with height. As we know that acceleration due to gravity at the surface of Earth, that is g equal to gm by r square, and acceleration due to gravity at height h from the Earth's surface such that the height h is very small than r, that is g dash gravitational acceleration variation g dash equal to gm are constant and this r will be replaced by r plus h whole square. इस फिगर को देखिए, हमारे पास अर्थ है, इसका रेडियस है r, इसका सेंटर है o, करेक्ट, और ये यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रिप्लेस किया. अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को उसको डिस्प्लेस करें, देन
our distance of this object from the center of earth will be what? Radius of the earth plus h. So variation in gravitational acceleration at this point g dash equal to gm divided by r plus h whole square. Compare 1 and 2. अगर यहाँ से डिनोमिनेटर से अगर हम आर स्क्वायर को कॉमन ले ले, सो दिस जी डैश इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर एंड दिस टर्म आर प्लस एच होल स्क्वायर बिकम 1 प्लस एच ओवर आर होल स्क्वायर. नाउ दिस जी एम ओवर आर स्क्वायर इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज स्मॉल जी मल्टीप्लाइड बाय इस टर्म को अगर हम ऊपर ला जाए तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस एच ओवर आर होल माइनस 2 by extending this by binomial theorem, that is 1 plus nx. So this is our 1 and n is what? This is our n and this is our x. So अगर हम इसको ओपन करें by binomial theorem, that is g dash equal to g1 minus 2h over r. So this g dash show variation in gravitational acceleration due to height h such that the height h is very small than radius of the earth. So this shows variation in gravitational acceleration due to height. Note, the absolute decrease in gravitational acceleration be what? अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो उसको हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ ले जाए तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कितनी चेंज आएगी या कितनी डिक्रीज आएगी? दैट इज g minus g dash gravitational acceleration at the surface of earth minus gravitational acceleration at some height h. So by putting the value of g dash this one, so you obtain g minus g into 1 minus 2h by r. By simplify this, we obtain decrease in gravitational acceleration 2gh divided by r. This is the decrease in gravitational acceleration when an object moves from the surface of earth to some height. Now the fractional decrease in gravitational acceleration is defined as decrease in gravitational acceleration divided by gravitational acceleration in surface of earth is known as fractional decrease in gravitational acceleration. So del g की वैल्यू को पुट करें 2gh by r और g की जगह as it is. So this one. So this is known as fractional decrease in gravitational acceleration. The next point is variation in gravitational acceleration with depth. इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले आइए एक और स्लाइड को डिस्कस करते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे. इस फिगर को देखिए, हमारे पास x एक्सेस है और y एक्सेस. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, एक स्टोन है. इस स्टोन पर एक फोर्स एक्ट करता है टूवर्ड पॉजिटिव x एक्सिस पर, जिसकी मैग्नीट्यूड है 19.6 न्यूटन और इसका जो मास है इस ऑब्जेक्ट का वो है 2 किलोग्राम. So according to Newton's second law, the acceleration produced in this object is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. now इस सेकंड ग्राफ को देखें, अगेन यहाँ पर हमारे पास एक स्टोन पड़ा है ओरिजिन पर, एक फोर्स राइट में इस पर एक्ट करता है, उसका मैग्नीट्यूड है 19.6 न्यूटन. सेम मास है, उसका मास है 2 किलोग्राम. लेकिन इस टाइम इस पर लेफ्ट में भी सिमल्टेनियसली इसके साथ एक फोर्स एक्ट करता है, हमारे पास है 10 न्यूटन विच इज along नेगेटिव एक्सिस. So the net force act on this object will be what? This minus this, that is 9.6 Newton, and the acceleration produced in this object will be 9.6 divided by 2, that is 4.8 meter per second square. Mean acceleration is reduced. Now इस तल वन को देखे, ये हमारे पास अगेन सेम स्टोन है, इसके राइट पर एक फोर्स एक्ट करता है 19.6 न्यूटन और लेफ्ट पर एक फोर्स एक्ट करता है, वो भी हमारे पास है 19.6 न्यूटन. सो दिस टू फोर्सेस विल बी बैलेंस ईच अदर, सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस ऑब्जेक्ट विल बी 0. नाउ सिमिलर इस तीनों ग्राफ का अगर हम एनालॉग ले ले, इस तीनों ग्राफ को अगर हम एनालॉग ले ले, मीन इसको हम प्लेनेट के लिए इसको डिस्कस करें, तो हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह होगी. इस ग्राफ में देखिए, ये हमारे पास अर्थ है, यहाँ पर इस पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और इस पर एक फोर्स एक्ट करता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मींस सिंगल फोर्स है, तो इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. करेक्ट. सिमिलरली अगर इस ऑब्जेक्ट को हम डेप्थ में लाए, इस पॉइंट तक लाए, तो याद रखिए इस पर अर्थ डाउनवर्ड की तरफ
एक फोर्स एक्ट करेगा, लेकिन याद रखिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कुछ मैटर है और वो मैटर जो है इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो इट मीन्स द फोर्स एक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट विल बी रिड्यूस. इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कम हो जाएगा. इसी तरह इस ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसमें भी रिडक्शन आ जाएगा. सिमिलरली अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ज़मीन के सेंटर में लाए तो याद रखिए ज़मीन के ऊपर का जो सेंटर का जो ऊपर पार्ट है वो मैटर वो अर्थ का वो पोर्शन इसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और इसका जो नीचे पोर्शन है इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. करेक्ट. इस पोर्शन का ऊपर जो है हमारे पास मैटर है, इसका भी अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा. इस तरह इसके नीचे भी मैटर है, उसका भी अपना सेंटर ऑफ मास होगा. तो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ भी अर्थ अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू अपर पार्ट ऑफ द मैटर ऑफ द अर्थ. सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ भी अट्रैक्ट करेगा कौन? लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सेंटर. So it means at this point the net force act on the object will be zero and the acceleration of the body will be zero. अब इसी की बेस पर इसी के एक्सप्लेनेशन के बेस पर हम वेरिएशन इन जी इनसाइड द अर्थ को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे. सो आइए उसको देखते हैं. वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद डेप्थ. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वेयर या इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर. हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पर पड़ा है. ज़मीन के सेंटर से कितनी दूरी पर है? आर की दूरी पर है. इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? हमारे पास ये है. अब अगर इस मास ऑफ अर्थ को हम रिप्लेस करें डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम में, सो दिस इज डेंसिटी ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इक्वल टू व्हाट? रो 4/3 पाई आर क्यूब. बिकॉज वी अज्यूम दैट दिस अर्थ इज स्फीयर इन नेचर, सो इट्स वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब. सो अगर इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर पुट करें, सो वी ऑब्टेन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज 4/3 पाई रो जी इंटू आर. नाउ अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम ज़मीन के डेप्थ में लाए, मीन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाए, तो हमने एक डेप्थ को कवर किया, इसका नाम है स्मॉल डी. नाउ द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी व्हाट? Total radius of the earth minus this small distance d. So gravitational acceleration at this point will be what? G dash equal to 4/3 pi rho g into r minus d. और simply अगर यहाँ से हम r को कॉमन करें, so we obtain gravitational acceleration g dash equal to 4/3 pi rho g r into 1 minus d over r. But we know that this whole expression is known as gravitational acceleration at the surface of earth. So this g dash gravitational acceleration at some depth equal to g gravitational acceleration at the surface of earth into 1 minus d by r. So this expression show that gravitational acceleration g dash is proportional to r minus d. So it is clear that if d increase, the value of g decrease. At the center of earth means d equal to r, the acceleration will be equal to 0. मीन्स अगर हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम ज़मीन के सेंटर में लाए, तो इसका मतलब ये कि हमने जो डिस्टेंस कवर किया स्मॉल डी वो बराबर है रेडियस आर के. सो दिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी डैश इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर माइनस आर या सिंपल डी माइनस डी. सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम 0. और अगर इसी पॉइंट पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखें तो इस पर हर साइड में फोर्स एक्ट करेगा और ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेगा. सो इट मीन्स the net force act on the surface of the earth will be 0 and the object will be 0 and its corresponding gravitational acceleration will be equal to 0. Note the decrease in gravitational acceleration inside is what? Del g equal to g minus g dash, g equal to g minus g dash equal to बराबर है g into 1 minus d by r के. From this one. So the gravitational acceleration where will be decreased, that is g equal to gd divided by r. This is the
reduction in the gravitational acceleration at depth d, correct? And the absolute increase in gravitational acceleration outside, sorry, the absolute decrease, this is not increase, this is decrease, the absolute decrease in gravitational acceleration outside, और हमने पिछले वाले पॉइंट में डिस्कस किया है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हम ज़मीन के सम हाइट पर ले जाते हैं तो उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी उसमें जो डिक्रीज आएगी वो हमारे पास बराबर होगी 2h/r के। मीन्स द एब्सोल्यूट डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आउटसाइड इज 2g/r। अगर h को हम आसानी के लिए d में रिप्लेस करें सो दिस एक्सप्रेशन बिकम gravitational acceleration outside or some height is equal to 2g d divided by r, but this gd by r, this one is known as gravitational acceleration inside, so gravitational acceleration outside is equal to 2 times to gravitational acceleration inside, so outside the absolute of gravitational acceleration double to that of inside of the earth। means अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हम ज़मीन के 20 मीटर डेप्थ में ले जाए और इसकी एक्सेलरेशन में डिक्रीज आ जाए सपोज 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम 20 मीटर के हाइट में ले जाए तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में इंक्रीज आएगी डबल। मीन्स 2 into 0.1 मीन्स द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज विल बी 2 टाइम, करेक्ट। अगेन इस रिलेशन को अगेन देखें, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हम ज़मीन के इनसाइड में ले जाए सपोज 100 मीटर और उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में सपोज डिक्रीज आ जाए 1%, तो याद रखिए अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम 100 मीटर ज़मीन से ऊपर ले जाए तो इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में हमारे पास डिक्रीज आ जाएगी 2%। Now the one other important point about gravitational acceleration inside, याद रखिए हमारे पास मास अटैच टू द स्प्रिंग है, दिस इज इट्स मीन पोजीशन, और इस मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास जीरो होगी। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को हम एक्सटेंड करें यहाँ पर लाए, मीन्स इसको हम एक्सटेंड करें तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एज प्रोपोर्शनल टू -x, तो इस पॉइंट पर इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। या इस ऑब्जेक्ट को हम कंप्रेस करें यहाँ पर ले आए, मीन्स हम डिस्प्लेसमेंट कवर करें x, तो इस पॉइंट पर भी इसकी एक्सेलरेशन हमारे पास मैक्सिमम होगी। मीन्स एट एक्सट्रीम पोजीशन या एट एक्सट्रीम कंप्रेशन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, एट एक्सट्रीम एक्सटेंशन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, बट एट मीन पॉइंट एक्सेलरेशन इज जीरो। अब इस अर्थ को देके ये हमारे पास इसका सरफेस है तो इसकी एक्सेलरेशन हमारे पास है इस पॉइंट पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ये भी हमारे पास सरफेस है तो इस पॉइंट पर इसकी एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस सेंटर पर इसकी एक्सेलरेशन है हमारे पास जीरो। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करें इस पॉइंट से तो ये एक्सेलरेटरी मोशन स्टार्ट करेगा। मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट करेंगे बिटवीन टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड इट मीन एक्सेलरेशन इज जीरो। सिमिलरली बिल्कुल ये अब डायग्राम जो है बिल्कुल इसका एनालॉग है, ये हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। तो अगर हम किसी भी अर्थ में एक मिसाल के तौर पर एक टनल कर दे इस तरह और इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करे तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये अप डाउन मोशन स्टार्ट करेगा, यहाँ आएगा और फिर यहाँ, मीन्स अप डाउन या सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट करेगा। जिस तरह मास अटैच टू स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन के अप डाउन मोशन करता है, इसी तरह इस टनल में भी ऑब्जेक्ट जो है अप डाउन सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंटिन्यू करेगा। नाउ the next point is the variation of gravitational acceleration due to rotation of Earth. As shown in figure, an object of mass m placed at a point A, the mass m make angle theta to the equatorial line, which is also called angle of latitude. As the Earth is rotate about its own axis with angular velocity omega, then the mass m trace a circle of radius r after one complete rotation. As when an object moves in a circle, a centrifugal or pseudo force act on object which always along radius of the circle.
and the centrifugal force is equal to mr omega square. Now इस फिगर को देख, ये हमारे पास जो है अर्थ है, करेक्ट। ये लाइन जो है इसका इक्वेटर कहलाता है और ये लाइन जो है इसका कहलाता है पोल। नाउ कंसिडर एन ऑब्जेक्ट दिस वन which mass is small m placed at this point. As we know that this earth is rotate about its own axis and it complete one rotation in 24 hours. तो याद रखिए हमारे पास ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट ए पर पड़ा है, करेक्ट। अब अगर ये अर्थ रोटेशन स्टार्ट करे तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरह रोटेशन स्टार्ट करेगा अर्थ के साथ और वापस अपनी जगह आ जाएगा। मीन्स when earth rotate its own axis, then this body trace a circular path which radius is small r. अब हमें मालूम है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हो तो रेडियस के अलोंग एक्स एक्सिस पर इस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो इन दिस केस द फोर्स एक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट, that is centrifugal force, which is equal to mr omega square, where m is the mass of the object, r is the radius of this circle which traced by this object, and omega is the angular velocity of this object या earth. Now अगर हम इस फिगर को देखें, the distance between this point and the center of the circle is known as radius r, which make angle theta, correct। और यहाँ पर जो है ये हमारे पास रेडियस है, तो यहाँ पर हमारे पास एक और ट्राइंगल बनता है, दिस इज आर, ये थीटा है, राइट एंगल है, और ये एक और ट्राइंगल बनता है जिसका नाम है ए, दिस पॉइंट इज नोन एज बी एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ओ। सो इन दिस ट्राइंगल ए बी ओ cos theta equal to small r by capital R. This is our base in triangle A B O and this is our hypotenuse. So r equal to r cos theta. So it means the radius of this circle is equal to r cos theta. Now the centrifugal force act on this object, that is F equal to mr omega square, which is equal to this one. Now to find the variation in gravitational acceleration, again this is mass small m, this is our centrifugal force। तो यहाँ पर हमने एक और ट्राइंगल बनाया जिसका नाम है, this point is known as A, this is C and this is known as D। एक और ट्राइंगल हमारे पास बन गया, that is A, D and C। In this triangle, this AD is known as mr omega square cos theta, mean this is the base of this triangle। In this case, this is our centrifugal force component, that is mr omega square cos theta, which is opposite to the inward gravitational force of the earth। So when earth rotates about its own axis, then there are two forces act on this small object which is placed on the surface of the earth. One is inward force, that is known as weight of the object, and one is the centrifugal force component, that is mr omega square into cos theta. Now the net force that is equal to mg minus f centrifugal force। अब इस पॉइंट पर टू फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड, बोथ आर अपोजिट। So means its summation will be what? The net force is mg and minus f centrifugal force. The negative sign shows that this force is opposite to the gravitational force. But the net force due to the rotation of earth is mg dash, which is known as apparent weight of the object, equal to mg minus mr omega square into cos theta. This m and cancel, so g dash equal to g minus r is replaced by r cos theta omega square as it is into cos theta। So g dash, our variation in gravitational acceleration due to earth rotation will be equal to what? G, this is the gravitational acceleration 9.8 minus r omega square into cos square theta। This equation show the variation of gravitational acceleration g dash with respect to the rotation of the earth। Now consequences of this expression will be what? इस इक्वेशन के बेस पर हम वेरियस consequences को obtain कर सकते हैं, like this one।
For pole theta equal to 90 degree, the various consequences are at pole theta equal to 90 डिग्री का हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो इस जगह पर पड़ा हो इसको हम पोल कहते हैं और इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर. देन gravitational acceleration at pole g dash or g pole equal to g gravitational acceleration minus omega square r cos square into 19 cos 90 equal to 0. So gravitational acceleration at pole equal to g. There is no effect of rotational motion of the earth on the value of g at the poles. Means अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो और पोल पर पड़ा हो तो अर्थ की रोटेशन की वजह से उसकी वेट पर या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. नाउ कंसीक्वेंस नंबर 2 व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो वो इस जगह पर पड़ा हो मींस उसका लैटिट्यूड एंगल हमारे पास 0 हो दिस वन थीटा इक्वल टू 0 then gravitational acceleration at this point will be what? Gravitational acceleration at equator equal to g minus omega square r cos square 0 because here theta equal to 0 degree. So gravitational acceleration at equator equal to g minus omega square r, but we know that from the previous consequences that this g equal to gravitational acceleration at pole. So g equator equal to g pole minus omega square r, or this expression can be written as gravitational acceleration at pole minus g gravitational acceleration at equator equal to omega square r. But omega is what? Omega is angular displacement divided by time period t. When earth complete one rotation mean 2 pi radian, then the time take will be 24 hour or 24 multiplied by 86,600 second. So the gravitational acceleration at pole minus gravitational acceleration at equator is equal to this one. It means gravitational acceleration at pole is 0.034 meter per second square is greater than gravitational acceleration at equator. Now consequences number 3, when a body of mass m is moved from the equator to the pole, its weight as well as gravitational acceleration will be increased. And consequences number 4, if earth stop rotation then the value of g will be increased, means the weight of the object will be increased. Now fourth one, the variation in gravitational acceleration due to non-uniformity of the earth. The earth is not a uniformly dense object. There are different minerals, metals, water, oil, etc. inside the earth. Then at the surface there are mountains, seas, etc. Due to these non-uniformities in the mass distribution, the value of g is locally affected. Means हमारे पास जो अर्थ है उसकी डेंसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है, तो डिफरेंट पॉइंट पर जो है एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमारे पास एट द सरफेस ऑफ अर्थ एट डिफरेंट पॉइंट इट्स वैल्यू विल बी डिफरेंट. And point number 5, variation in gravitational acceleration due to non-sphericity of the earth. All formula or equation have been derived by assuming that the earth is a uniform solid sphere. The shape of the earth slightly deviates from the perfect sphere. The radius in the equatorial plane is about 21 km larger than the radius along the poles. Due to this, force of gravity is more at the pole and less at the equator. The value of g is accordingly larger at the poles and less at the equator. Note, due to rotation of earth also, the value of g is smaller at the equator than that at the poles. Point 5 का मतलब क्या है कि याद रखिए अभी तक हमने जितनी भी एक्सप्रेशन को डिराइव किया है हमने ये अज्यूम किया था हमारे पास अर्थ जो है वो स्फीयर है, हालांकि अर्थ हमारे पास स्फीयर नहीं है, हमारे पास एलिप्टिकल है. ये इसका जो है इक्वेटर है और वही इक्वेटर जो है इसकी लेंथ जो है इस पोल से 21 किलोमीटर ज़्यादा है. करेक्ट. सो एक्चुअल जो अर्थ का पिक्चर है वो हमारे पास ये है, जबकि हमने जो एजम्पशन की है हमारे पास अर्थ को हमने लिया है स्फीयर. सो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ जी विल बी डिस्टर्ब फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू दिस एलिप्टिकल शेप.